variability. And second is EMF lasts only till the flux is changing. When the flux becomes constant, induced EMF will reduce to zero. So Faraday's alternate first law, it states that EMF induced in a conductor. It states that EMF induced in a conductor is directly proportional to EMF induced in a conductor is directly proportional to rate of change of magnetic flux to the conductor. Rate of change of magnetic flux to that conductor. That is E is equals to minus d phi by dt. E is equals to minus d phi by dt. Negative sign signifies that the induction effect always opposes. Negative sign signifies that the induction effect always opposes the cause which produces them. Induction effects always opposes the cause which produces them. Induction effects always opposes the cause which produces them. Second law. The induced EMF lasts only till the magnetic flux is changing. Induced EMF lasts only till the magnetic flux is changing. Once the magnetic flux becomes constant, induced EMF will be zero. Magnetic flux becomes constant, induced EMF will be zero. Direction of induced EMF and induced current. Direction of induced EMF and induced current. Direction of induced EMF and induced current. Okay, मैं ऐसे लूँ, say if you have a लूप लिया है, इसमें कोई करंट फ्लो नहीं कर रही. मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कुछ हम assume कर देते हैं इलेक्ट्रिक. Magnetic field, external magnetic field is direction में apply किया, and I'm saying that magnitude of magnetic field is increasing. अब एरिया वेक्टर की दो डायरेक्शंस हो सकती हैं, तो एरिया वेक्टर की कोई एक डायरेक्शन assume कर दो, वो आपके ऊपर है कि आपने किसे लेना है. So अगर मैं एरिया वेक्टर की डायरेक्शन को मार्क करता हूँ in this form, तो B और A के सेम डायरेक्शन है, फ्लक्स विल बी पॉजिटिव. हमने एरिया वेक्टर की डायरेक्शन मार्क करनी है सबसे पहले. Then place the thumb in the direction of area vector and curl the fingers of right hand. तो इस फॉर्म में आएगा कि ऐसे फिंगर्स कर्ल होंगे. इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन जब आपने मार्क करनी है, अगर ईएमएफ पॉजिटिव है
तो जिस डायरेक्शन में राइट हैंड की फिंगर्स कर्ल की है वो इंड्यूस करंट की डायरेक्शन। अब हमारे पास फॉर्मूला है that E is equals to माइनस d5/dt। तो अगर फ्लक्स बढ़ रहा है मतलब अगर d5/dt पॉजिटिव है तो ईएमएफ नेगेटिव है। इस केस में फ्लक्स बढ़ रहा है या कम हो रहा है? बिकॉज मैंने बी इंक्रीजिंग शो किया तो फ्लक्स बढ़ रहा है मतलब ईएमएफ इंड्यूस्ड नेगेटिव है। फिंगर्स को कर्ल किया था थंब को इधर रख के तो हमारे पास आया था ऐसे, तो करंट मतलब इसके ऑपोजिट फ्लो करेगी। अगर फिंगर्स वैसे मींस करंट फ्लोज इन दिस डायरेक्शन, पर इसका अपना मैग्नेटिक फील्ड होगा इंड्यूस्ड करंट का, उसकी डायरेक्शन वहां से आएगी डाउनवर्ड्स। मतलब ये बढ़ रहा है तो इसको बढ़ने नहीं देना। अगर ये कम हो रहा होता d5/dt नेगेटिव होता तो ईएमएफ पॉजिटिव। ईएमएफ पॉजिटिव तो करंट उसी डायरेक्शन में फ्लो करने थे जिस डायरेक्शन में राइट हैंड की फिंगर्स को कर्ल किए, तो मैग्नेटिक फील्ड भी अपवर्ड्स आता। मतलब कम हो रहा है तो कम भी नहीं होने देना बिकॉज इट ऑलवेज अपोजेस द कॉज। मैंने भी यही लिखा है कि नेगेटिव साइन सिग्निफाइज that EMF always opposes the cause which produces it। तो इस केस में कॉज कौन सा था? मैग्नेटिक फील्ड का बढ़ना या कम होना। तो इंड्यूस्ड करंट हमेशा फ्लो करेगी कि अगर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है तो उसको बढ़ने नहीं देगी, कम हो रहा है तो कम नहीं होने देगी। तो कम हो रहा है तो सपोर्ट करना है और बढ़ रहा है तो उसको अपोज करना है। सेकेंडरी डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ आपको वहां से दिखेगा नहीं, इधर बैठे तो है एक्सीडर। डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ फर्स्ट is right. Define the direction of area vector. Define the direction of area vector as area vector is perpendicular to the plane. Two possible directions are there. नॉर्मली हम एरिया वेक्टर की डायरेक्शन कैसे निकालते थे कि करंट फ्लो कर रही है तो करंट की डायरेक्शन में फोल्ड कर दो। इसमें करंट तो पहले फ्लो ही नहीं कर रही तो इसलिए हम खुद से डिफाइन कर सकते हैं। There are two possible directions of area vector perpendicular to the plane. Assume one direction as positive. Assume one direction as positive. Second point लिखो। From the direction of B and A, B वाले दोनों के ऊपर वेक्टर साइन। From the direction of B and A, we can find if the flux is positive or negative or zero. Because positive flux कब होगा whenever angle is acute. Zero flux if angle is 90 and negative flux if angle is obtuse because cos second coordinate में negative हो जाएगा। So from direction of B and A we can find the flux is positive, negative or zero. Also find the rate of change of magnetic flux d5/dt. Also find the rate of change of magnetic flux d5/dt. If d5/dt is positive, तो मैं उसको ऐसे ही लिखना है d5 को p के साथ लिखना है so that it's clear कि मैग्नेटिक फ्लक्स की बात हो रही है, इलेक्ट्रिक की नहीं हो रही है। If d5/dt is positive, EMF induced is negative. EMF induced is negative. And if d5/dt is negative, EMF induced will be positive. EMF induced will be positive. Next point. Place thumb in the direction. Place the thumb of right hand. Place the thumb of right hand in the direction of area vector.
Place the thumb of right hand in the direction of area vector and curl the fingers of right hand. If EMF is positive, current flows. If EMF is positive, current flows in the same direction as the one in which fingers are curled. If EMF is positive, current flows in the same direction as the fingers are curled. And if EMF is negative, current flows in opposite direction. A diagram बनाना which to example की तरह लिख देते हैं. मतलब this is a induced current अगर confusion है तो उसके साथ सीखिए. कि हमने ये खुद से कोई नहीं, this is induced current which flows. As shown in the figure, magnetic field intensity and area vector. Magnetic field intensity and area vector are parallel. Therefore, flux is positive. As the magnitude of magnetic field intensity is increasing, the flux increases. d phi by dt will be positive. And EMF induced is negative. Therefore, induced current flows opposite to the direction in which fingers of right hand are curled. Induced current flows in direction opposite to the direction in which fingers of right hand are curled. जैसे मैं ऐसे लूं से एक एग्जाम्पल, मेरे पास एक सर्कुलर लूं, एरिया वेक्टर में मैंने डाउनवर्ड्स ले लिया परपेंडिकुलर टू द कोन एंड मैग्नेटिक फील्ड में डाउनवर्ड्स ले लिया, फ्लक्स विल बी पॉजिटिव. मैंने इसको दोनों साइड से खींचना शुरू किया. एरिया विल इंक्रीज और डिक्रीज. एरिया डिक्रीज करेगा तो फ्लक्सेस एंगल चेंज कोई नहीं कर रहा, बी और ए में एंगल तो सेम ही था. और जब आपने इसको साइड से खींचना शुरू किया, शेड होना शुरू हो जाएगा एरिया.
एरिया थ्रू विच मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर पासिंग। एरिया कम हो जाएगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स कम हो जाएगा। d5 by dt नेगेटिव, ईएमएफ इंड्यूस्ड पॉजिटिव, करंट किस डायरेक्शन में फ्लो करेगी, थंब की डायरेक्शन कौन सी होनी चाहिए, एरिया वेक्टर इनवर्ट्स, और करंट विल फ्लो इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो अगर आप उसको वापस से पोजीशन पे लाओगे तो फिर एंटी क्लॉकवाइज। तो हमेशा आपको ये देखना है कि d5 by dt पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ईएमएफ पॉजिटिव है या नेगेटिव है, उसे अकॉर्डिंगली आप आंसर दिया करोगे। नेक्स्ट राइट डाउन मोशनल ईएमएफ, मोशनल ईएमएफ नाम से क्लियर है, ईएमएफ इंड्यूस्ड बाय द मोशन ऑफ कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड। कि अगर मेरे पास एक कंडक्टर है which is moving in uniform magnetic field, ये मैग्नेटिक में वैसे कर चुके हैं ऑलरेडी। इसमें एक कंडक्टर है which is moving with certain velocity। इस कंडक्टर के अंदर जो पॉजिटिव चार्जेस हैं फोर्स किधर लगेगी, मैग्नेटिक फील्ड के कारण। फॉर्मूला इज क्यू वी क्रॉस टी, राइट हैंड के फिंगर्स वेलोसिटी के डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ कौन, पॉजिटिव चार्जेस पे फोर्स लगेंगे अपवर्ड्स मतलब टुवर्ड्स पी, और नेगेटिव चार्जेस पे टुवर्ड्स क्यू। अभी जब मोशन जब स्टार्ट हुई थी तो चार्जेस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थे कंडक्टर में। कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो था, तो जब हमने अब चार्ज में सिर्फ एक ही फोर्स लग रही थी, मैग्नेटिक फोर्स, जब मूव करना शुरू हुआ। पर अगर इधर पॉजिटिव चार्जेस एक्युमुलेट होना शुरू हो गया और इधर नेगेटिव, तो दोनों एंड्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया। जैसे जैसे मूव करते जाएंगे पॉजिटिव चार्जेस अपवर्ड्स, बिकॉज जब एक बार थोड़ा सा भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो गया तो अब चार्जेस पे दो फोर्सेस लगेंगी, मैग्नेटिक फोर्स QV और इलेक्ट्रिक फोर्स QE। QV भी तो कांस्टेंट है क्योंकि रॉड कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है। इनिशियली था कि सिर्फ QV थी, मैग्नेटिक फोर्स थी, और ये फोर्स जीरो थी। तो नेट फोर्स किसी भी पॉजिटिव चार्ज पे किस डायरेक्शन में लग रही थी, टुवर्ड्स पी। अब इसमें एक पॉजिटिव चार्ज देखा अगर मैंने, इस पॉजिटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, अगर मैं टेस्ट चार्ज यहाँ पे रखूं, ये पॉजिटिव चार्ज उसको रिपेल करेगा और नेगेटिव अट्रैक्ट, और इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में, इनटू क्यू। तो पॉजिटिव चार्ज पे एक फोर्स लगनी शुरू हो गई QE, मैग्नेटिक फोर्स कितनी थी, जो अपवर्ड लग रही थी। इनिशियली QB भी QE से ज्यादा था, जब तक QB भी ज्यादा है चार्जेस डिस्प्लेस होते रहेंगे अपवर्ड डायरेक्शन में, नेगेटिव डाउनवर्ड और पॉजिटिव अपवर्ड्स। पर जैसे जैसे चार्जेस बढ़ते जाएंगे इसका मैग्नीट्यूड बढ़ता जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का। एक स्टेज आएगी जब ये दोनों बैलेंस हो जाएंगे, जब ये दोनों बैलेंस हो जाएंगे तो नेट फोर्स ऑन द चार्ज, उस केस में जो दोनों एंड्स में पोटेंशियल डिफरेंस होगा दैट विल बी कॉल्ड मोशनल ईएमएफ। तो बैलेंस कब होगा, व्हेन QE is equals to QVT is, this is the electric field. Electric field can be written as EMF upon length, potential difference per unit length. So motional EMF is KVL.
So it depends on velocity, magnetic field and length. इसके बाद में एक वेक्टर फॉर्म भी करेंगे, बिकॉज वेक्टर फॉर्म से ज्यादा न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाते हैं, बट अभी बोर्ड के लिए सिर्फ हमें टीडीएल चाहिए होता है। अच्छा, अगर रॉड मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल मूव करे तो ही हमें प्रोड्यूस होगी। इसमें रॉड इज मूविंग परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। अगर मैग्नेटिक फील्ड भी डाउनवर्ड्स है और रॉड भी ऐसे ही जा रही है, तो वी और बी में एंगल 0, तो ईएमएफ इंड्यूस विल बी 0। तो वेक्टर फॉर्म से भी ज्यादा अच्छे से समझ आता है, बिकॉज हमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, वेक्टर फॉर्म से सॉल्व हो जाएगा। इसको एक और वे में भी सोच सकते हो। स्लाइड वायर जनरेटर पता क्या होता है? स्लाइड वायर जनरेटर, स्लाइड वायर जनरेटर होता है, मेरा कंडक्टर स्लाइड्स एंड इट जनरेट्स करंट। Its shape is like as a U-shaped conducting rails, और उसके ऊपर एक रॉड को स्लाइड करेंगे। A rod of length slides over it. This whole system is placed in magnetic field which is perpendicular inwards. अगर ये रॉड मूव करती है तो एरिया बाउंडेड कौन सा लूप का? ये एरिया, मुझे तो बाहर ओपन सर्किट है। अगर ये रॉड मूव करती है तो इन स्मॉल टाइम dt it travels a distance dt, इसकी लेंथ मान लो l। अगर ये रॉड PQ से P डैश Q डैश पे आ गई तो फ्लक्स कितना बड़ा? मैग्नेटिक फ्लक्स। पहले एरिया सिर्फ ये था यहां तक, अब ये पूरा एरिया लेना, तो ये इंक्रीज इन एरिया, तो मैग्नेटिक फ्लक्स कितना बड़ा? वी कैन से d phi is equals to मैग्नेटिक फील्ड में चेंज इन एरिया, एरिया में चेंज कितना है? ये एरिया कितना है? तो डी फाइव बाई डी टी कितना आ गया? भी, तो इसमें भी सेम ही रिजल्ट आएगा। अगर मैं इसमें पूछूं इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन क्या होगी? एरिया वेक्टर तो मैंने इनवर्स ले लिया, इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मान। फ्लक्स बढ़ रहा है कम हो रहा है? बढ़ रहा है। ईएमएफ इंड्यूस्ड नेगेटिव, ईएमएफ इंड्यूस्ड नेगेटिव, तब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट फिंगर्स ऐसे कर्ल होंगी, तो इंड्यूस्ड करंट ऐसे फ्लो करेगी इस कंडक्टर में। अब मान लो इसमें इंड्यूस्ड करंट फ्लो कर रही है आई, इस कंडक्टर PQ पे फोर्स कितनी लगेगी किसी इंस्टेंट पे? IL क्रॉस B, फोर्स एक्टिंग एट एनी इंस्टेंट इज IL क्रॉस B। I is EMF induced in the circuit upon resistance of circuit, Ohm's law into LED. EMF induced at any instant is, so this say force which acts is, so P square L square V by R। ये डायरेक्शन क्या होगी फोर्स की? Thumb in the direction, L cross B की डायरेक्शन, thumb in the direction of current,
Magnetic field. Again, it's clear the force acts in such a way that it opposes the cause which produces it. Cause क्या था? Motion of conductor towards right. तो force उसको oppose कर रही है towards left. तो मतलब इसको मूव करने के लिए हमें कुछ वर्क डन करना पड़ेगा. Rate at which work done कितना होगा? Rate at which work is done is known as power. तो power is force into velocity. अगर अपोजिंग फोर्स इधर लग रही है, मेरे को आगे लेके जाने कांस्टेंट वेलोसिटी, तो इतनी फोर्स इधर लगानी पड़ेगी. अगर फोर्स हमारे पास है v स्क्वायर एल स्क्वायर v बाय आर, पावर इज a स्क्वायर एल स्क्वायर v स्क्वायर बाय आर, v से मल्टीप्लाई हो जाएगा. जो हमने वर्क डन किया है कहां गया? अब आप सोचो इसमें करंट फ्लो कर रही थी, अगर कंडक्टर में करंट फ्लो करेगी तो हीट डिसिपेट होगी. Rate at which heat is eliminated is I square R. T तो एनर्जी हो जाएगी ना. Power is I square R. Rate at which energy is dissipated is I square R. I कितना? EMF upon सेम रिजल्ट आ जाएगा, इसको भी D से मल्टीप्लाई करोगे तो. मतलब जिस रेट से आप काम कर रहे थे रॉड को मूव करने के लिए, दैट इज डिसिपेटेड इन द फॉर्म ऑफ हीट. तो उस हीट से आप कुछ भी करोगे, उसको किसी और फॉर्म में चेंज करना है तो कर सकते हो. सो दिस इज नॉन एज स्लाइड वायर जनरेटर्स. क्या आपने रॉड को मूव करके करंट इंड्यूस करंट जनरेट कर ली. बिकॉज एसी जनरेटर्स में क्या होता है, आर्मेचर कॉइल को रोटेट करते हैं, इसमें रोटेट नहीं किया, कंडक्टर को ऐसे सीधा मूव किया, इसलिए नाम रखा हुआ है स्लाइड वायर जनरेटर. जब स्लाइड कर रहे हो और उसके कारण ईएमएफ जनरेट हो रही है. अब अगर मैं फोर्स नहीं लगा रहा, एक्सटर्नल फोर्स ना लगाऊं, उसमें मैंने कहा उसको कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करने के लिए मैं एक्सटर्नल फोर्स लगा रहा था. अगर मैं फोर्स नहीं लगाऊंगा तो इस रॉड को एक बार इनिशियल वेलोसिटी दी और छोड़ दिया, इसकी वेलोसिटी टाइम के साथ कम होती जाएगी, बिकॉज़ देयर इज एन अपोजिंग फोर्स. तो फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हो. Or the velocity varies with time. Variable force है. Net force कितनी? Net force कितनी? माइनस BLV. और वो वेरिएबल है, d पर डिपेंड कर रही है, मतलब m dv by dt is equals to minus BLV. तो इंटीग्रेट कर देंगे. Velocity varies from initial velocity, कुछ assume कर लो कि v0 to b की वैल्यू निकाल देंगे. समझ आया इतना? में इसके ऊपर 17 हमारी करता हूं एक फॉर्मूला के ऊपर, इसको जगा दो, सो गई. अब रात को नहीं सोते क्यों? तुम जब क्लास में सो लोगे समझ कैसे आएगा? नेक्स्ट राइट, मोशनल ईएमएफ, और ये डायग्राम बना दो. मोशनल ईएमएफ मेडिकल वालों को थोड़ी बहुत मुश्किल आ सकती है, बिकॉज इसके काफी सारे न्यूमेरिकल्स इंटीग्रेशन बेस्ड है. टफ तो नहीं है, बट ज्यादातर एक तो एक्स रेज़ टू पावर एन की इंटीग्रेशन तो आती है. साइन कॉस की इसमें नहीं लगेगी, बट हाँ एक्सपोनेंशियल की लग सकती है, या 1 by x is equals to log x. You can write motional EMF. EMF induced across. EMF induced across two ends of the conductor
when it moves in uniform magnetic field. EMF induced across two ends of conductor when it moves in uniform magnetic field. Consider a conductor PQ of length L. Consider a conductor PQ of length L moving in magnetic field of intensity B. Consider a conductor PQ of length L moving in magnetic field of intensity B. As shown in the figure, VV and L are mutually perpendicular. Because अभी हम normal spool का case कर रहे हैं जहाँ पे तीनों perpendicular हैं, otherwise they can give any angle also. As shown in the figure, VV and L are mutually perpendicular. As the rod moves, the charges in the conductor experience magnetic force. As the rod moves, charges in the conductor experience magnetic force. Fm is equals to QVD. Fm is equals to QVD. Due to this force, the positive charges starts accumulating at P and negative charges at Q. Due to this force, positive charges starts accumulating at P and negative charges at Q. The displacement of charges. Generates induced electric field. So electrostatic field and non-electrostatic field. Non-electrostatic because electrostatic field is due to charges simple. Creates induced electric field. And the magnitude of induced electric field increases. As the accumulation of charges increases on two ends. As the accumulation of charges increases on two ends. Thus, in addition to magnetic force, an opposing electric force starts acting on the charges. In addition to magnetic force, an opposing electric force starts acting on the charges. And the magnitude of electric force increases. Till it balances the magnetic force. Magnitude of electric force increases till it balances the electric force. That is, QE is equals to नॉर्मल इसको भी लिख सकते हैं पर सारी कुछ इसको मतलब थोड़ा ई लिख देती है ये में इलेक्ट्रिक फ्यूजन रखना कि ये EMF है ये इलेक्ट्रिक E is equals to VVA. It's divided in America.
A rod of length L hinged at one end. A rod of length L hinged at one end is made to rotate. In magnetic field, acting perpendicular to the plane of rotation. In magnetic field acting perpendicular to the plane of rotation with angular velocity omega. With angular velocity omega. Fine. Motional EMF across two ends of the rod. Find motional EMF across two ends of the rod. हमारे पास इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड है. रॉड hinged at one end. Let it be hinged at point O. हमें इसका ये प्लेन ऑफ रोटेशन हो गया. मैग्नेटिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर and it's rotating with angular velocity omega. तो हमने बताना है इसके दो एंड्स के क्रॉस EMF इंड्यूस कितनी होगी. बिकॉज रोटेशनल मोशन है, रिजिड बॉडी रोटेशन में ओमेगा सेम होता है पर हर पॉइंट की लीनियर वेलोसिटी अलग होती है. तो अब BVL नहीं लगा सकते बिकॉज B सेम नहीं है. तो पहले हम स्मॉल लेंथ dx ले लेंगे. अगर मैंने यहाँ पे स्मॉल लेंथ dx कंसिडर की at a distance x from center, इसकी वेलोसिटी v, इसके क्रॉस EMF BV dx, because formula is BVL. L को हम ले रहे हैं dx, तो इसे EMF induced across small length. रोटेशनल मोशन है तो V और ओमेगा में रिलेशन इज करो R ओमेगा. ये जो स्मॉल लेंथ dx है इसका रेडियस ऑफ रोटेशन क्या है. अगर मैं इस पार्ट को लूं तो ये ऐसे मूव कर रहा है तो इसका रेडियस ऑफ पाथ x, तो इसे इट विल बी x वेरिएबल है. टोटल EMF इंड्यूस्ड x वेरीज फ्रॉम 0 to L. अब नॉर्मल ये बोर्ड में भी बहुत बार आया है, कंपटीशन में भी बहुत बार आया है. मैंने सबसे सिंपल वाला केस लिया अभी से हिंज एट वन एंड. वो किसी भी पॉइंट से हिंज कर सकते हैं, सिर्फ लिमिट्स ही चेंज होगी. अगर मैं कहूं इट्स हिंज्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ L/4 फ्रॉम वन एंड, तो लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन विल बी -L/4 to 3L/4. सेंटर से हिंज कर दिया तो 0 आ जाएगी ना लिमिट पुट करोगे तो, बिकॉज -L/2 to +L/2. अब उन्होंने एक वेरिएशन और पूछी. उन्होंने कहा कि जैसे साइक्लिक के स्पोक्स है तो दिस इज सिमिलर. एक एंड हिंज्ड है सेंटर से और वो साइकिल घूम रहा है ऐसे अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड में. तो EMF induced across one spoke is half b omega L square. अगर टोटल n स्पोक्स है तो EMF induced will be एक के लिए हाफ b omega L square. तो n स्पोक्स है तो सेम हाफ b omega L square because spokes are connected in parallel. सबका एक एंड सेंटर से कनेक्टेड है, दूसरा एंड सर्कमफ्रेंस है, तो पैरेलल कनेक्शन बना ना. पैरेलल यही होता था, एक एंड एक पॉइंट से कनेक्टेड है, दूसरा दूसरे एंड से. तो सारी रॉड्स का एक एंड सेंटर से कनेक्टेड था, दूसरा एंड सर्कमफ्रेंस से कनेक्टेड है. तो पोटेंशियल डिफरेंस जो एक के क्रॉस होगा वही सबके क्रॉस होगा, एन से मल्टीप्लाई नहीं करना. So it will be half b omega L square only. तो इस न्यूमेरिकल की वेरिएशन में सिर्फ वो हिंज पॉइंट बदलते हैं, न्यूमेरिकल सेम ही रहता है.
डायग्राम बना लो फिर समझ आ गया ना कैसे ये करना सॉल्व लिमिट्स पुट करना तो एल स्क्वायर बाय 4 माइनस एल स्क्वायर बाय 4 आएगी करके देख लिया मैथ 2 मिनट एक्स स्क्वायर बाय 2 और लिमिट्स पुट करनी है माइनस एल बाय 2 टू प्लस एल बाय 2 आया 0 ये ऐड कैसे होनी है उसने पिटाई कर दे मेरी पकड़ के अगर ये लिमिट्स गलत पुट करोगे मैथ्स में तो so it will come out to be 0 so you can write portion में as the rod sorry as the rod rotates about a fixed point angular velocity of all points of the rod is same angular velocity of all points of the rod is same but linear velocity is different angular velocity of all points of the rod is same but linear velocity is different plus first any small length dx of the rod for any small length dx of the rod moving in a circle of radius x the EMF induced is d is equal to dv dx total EMF induces d omega तो कांस्टेंट है x dx बोर्ड में इस पर नॉर्मल अमेरिकन भी आते हैं जहाँ पे फ्रीक्वेंसी दे देते हैं तो यू जस्ट हैव टू सब्स्टिट्यूट ओमेगा एज 2πi सीबीएसई में मेरे ख्याल से 5 या 6 बार ही आएगा न्यूमेरिकल डिफरेंट इंच पॉइंट्स के साथ नेक्स्ट another न्यूमेरिकल थोड़ा अच्छे वाला ग्राउंड न्यूमेरिकल इसमें होमवर्क देते हो तो वो जनरली डाउट में आता फिगर शोज बुक का 20th क्वेश्चन है लेट्स सी द पेज नंबर 307 figure shows a circular coil of n turns and radius a connected to battery of EMF E and rheostat. Rheostat has length L and resistance capital R. Rheostat has length L and resistance capital R. Resistance of coil is small r. A small circular loop of radius a dash
and resistance R dash is placed coaxially. A small circular loop of radius A dash and resistance R dash, small R dash, is placed coaxially with the coil at distance x. In the beginning, sliding contact of rheostat is at left end and then moves towards right. Sliding contact of rheostat is at left end and then moves towards right with constant speed t. Find the EMF induced at any instant. आपको साथ में डायग्राम के बता. Find the EMF induced at any instant. So हमारे को ऐसे दिया है. हमारे पास ये कॉइल है जिसका एन टर्न्स है. इसका रेडियस ए है, इसकी रेजिस्टेंस आर है. इस रियोस्टैट की मैक्सिमम रेजिस्टेंस कैपिटल आर है, इसकी लेंथ एल है. और ये स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट इधर मूव कर रहा है विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी. मतलब जब ये एंड इधर होगा तो रेजिस्टेंस मैक्सिमम, जब ये इधर पहुंच गया तो रेजिस्टेंस ऑफ रियोस्टैट बिकम्स 0. तो हमें एनी इंस्टेंट बता दी किसी टाइम पे. अब जब रियोस्टैट मूव करेगा, ये स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट मूव करेगा तो रेजिस्टेंस कम हो रही है, बढ़ रही है? कम हो रही है. रेजिस्टेंस कम होगी तो करंट बढ़ेगी. इस कॉइल में करंट बढ़नी शुरू हो जाएगी. इस कॉइल में करंट बढ़ेगी. इसकी मैग्नेटिक लाइंस ऑपोजिट्स में से पास कर रही हैं. तो जब करंट बढ़ेगी मतलब इस कॉइल में से फ्लक्स बढ़ेगा. अगर इस कॉइल में फ्लक्स बढ़ेगा तो इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगी. तो हमने बताया एट एनी इंस्टेंट कितनी होगी. एट एनी इंस्टेंट. लॉजिक समझ आया कि as the sliding contact moves, resistance of the circuit decreases. Current in the circuit increases, current in the coil increases, current in coil increases the magnetic field of coil. The magnetic field of larger coil are passing through magnetic field of smaller coil, और ये distance दिया है. ये क्वेश्चन में क्या होगा? इनके सेंटर्स में डिस्टेंस x है.
तो मतलब मेरे को जो फॉर्मूला लगाना है सर्कुलर कॉइल के एक्सिस पे फॉर्मूला क्या था मैग्नेटिक फील्ड का म्यू नॉट एन आई ए स्क्वायर अपॉन 2 ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज टू पावर 3/2। इसमें से फ्लक्स कितना आ जाएगा? इसका फ्लक्स इसके अपने फील्ड के कारण है या बड़े कॉइल के फील्ड के कारण? तो बड़े कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड अगर बी तो फ्लक्स थ्रू दिस सेकेंडरी कॉइल इज बी इनटू एरिया ऑफ सेकेंडरी कॉइल। एरिया ऑफ सेकेंडरी कॉइल इज पाई ए डैश स्क्वायर। तो पहले हम फ्लक्स निकाल लेंगे एंड देन ईएमएफ इंड्यूस्ड इज माइनस डी फाई बाई dt। मैग्नीट्यूड भी निकाल दोगे तो सिर्फ डी फाई बाई dt। पहले फ्लक्स निकालना है फिर ईएमएफ इंड्यूस निकालना। थोड़ी सी इसमें ठीक से अगर मैनेज कर लिया इसको आपने एट एनी इंस्टेंट तो फिर ये सॉल्व हो जाएगा। So you can write the concept first. बुक में है वैसे बुक में शोन फिगर था फिगर दी हुई है बुक। आपको डायग्राम खुद नहीं बनाना था वो सब दिया है। पेज नंबर 306 से करना शुरू कर देना। कोशिश करना कि रोज के 10 to 15 एटलीस्ट कर लो। पहले 15 तो बहुत ही आसान है वो तो मतलब सिंपल है। जैसे 5 की वैल्यू दी है 80 स्क्वायर प्लस बीटी प्लस सी तो एबीसी के ऐसे यूनिट्स बता दो फिर ईएमएफ इंड्यूस बता दो तो डी फाई बाई डी करना। तो ऐसे क्वेश्चन है वो तो इजीली हो जाएंगे। या सिंपल बीएलबी के हो सकते हैं बी दिया एल दिया बी दिया तो बीएलबी बता दो कितना। तो अच्छे क्वेश्चन नॉर्मली 30 के बाद शुरू होंगे। So you can write as shown in figure. If the sliding contact, as shown in figure, if the sliding contact starts moving towards right, the resistance of the circuit will decrease. Thus, current flowing through the coil. Thus, current flowing through the coil will increase. The magnetic field of the larger coil increases with magnetic field of larger coil increases with increase in current in the coil. इसको अगर आपने समझने के लिए नाम देना है तो you can call it primary. Because कल भी हमने जिसके साथ सोर्स ऑफ ईएमएफ लगाया था वो प्राइमरी था और दूसरा सेकेंडरी था। As the magnetic field lines of primary coil are passing through secondary, as magnetic field lines of primary coil are passing through secondary, therefore if current through primary coil increases, flux through secondary coil will also increase. Mathematically, flux through secondary coil is magnetic field of primary coil into area of secondary coil. उसको अगर मैं कुछ ले लेता हूँ ईएमएफ से ले ली थी तो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ प्राइमरी कॉइल इज into area of secondary coil. अब इसमें देखो तो सब कांस्टेंट है म्यू नॉट एन ए डैश एक्स ये सब फिक्स्ड है
सिर्फ आई वेरिएबल है, फिर आई इज करंट थ्रू द कॉइल। आई होगा कितना, इस लूप में करंट क्यों फ्लो करेगी, बिकॉज ऑफ बैटरी ईएमएफ इज ई। इस पूरे लूप की रेजिस्टेंस कितनी है, रेजिस्टेंस ऑफ रियोस्टैट प्लस रेजिस्टेंस ऑफ दिस कॉइल, तो इसे करंट इज R dash is resistance at any instant। रियोस्टैट की रेजिस्टेंस वेरिएबल है, वो स्लाइड कर रहा है, इनिशियली कितनी थी R और फाइनली 0। तो अगर मैं लूँ एट एनी टाइम, ये जो डिस्टेंस ट्रैवल्ड होगा दिस विल बी dt। हमें दिस स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट मूव्स विद कांस्टेंट वेलोसिटी v, तो टाइम t में इसने डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया dt। बचा कितना डिस्टेंस, अगर ये टोटल टाइम दी थी l, दिस विल बी, सिर्फ इस पार्ट की रेजिस्टेंस चाहिए l माइनस एक्स की, तो l माइनस एक्स की रेजिस्टेंस क्या होगी इन टाइम t, sliding contact move distance x, so the rheostat resistance is due to length L minus x। क्लियर है, ठीक है, x डिस्टेंस आगे आ गया, मतलब ऐसे था ना कि अगर ये x डिस्टेंस आगे आ गया तो ये कितनी बची रियोस्टैट की लेंथ L माइनस एक्स, तो सिर्फ ये तो ओपन सर्किट में चला गया, इसकी रेजिस्टेंस कितनी होगी, वी कैन से R dash is resistance per unit length into length, or you can say this is R dash is R by L into L minus pt, or this is R minus R dt by L। तो फ्लक्स कितना हो गया, फ्लक्स इज म्यू नॉट एन आई ए स्क्वायर, आई को भी बताओ, फ्लक्स इज म्यू नॉट एन ए स्क्वायर पाई ए डैश स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस x को आ गया, इसको कुछ और कर दो, बस ये भी x रहेगा, इसको इसका x नॉट रहेगा, तो दो x आ जाएंगे। EMF निकालनी है तो d5 by dt, ये सारी टर्म तो कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, सिर्फ इसी को डिफरेंशिएट करना, 1/r plus r dash, तो u by v का फॉर्मूला लगाओ, आंसर लगा दो, समझ में आया ना, यहाँ पर r dash की वैल्यू पुट कर देना है r minus r v by l and t।
आगे डिफरेंशिएशन चाहिए आर बी टी बाई एल के आर बी बाई एल, तो सिर्फ आर बी बाई एल से मल्टीप्लाई कर। तो आंसर क्या बना, म्यू नॉट एन ए स्क्वायर बाई ए डैश स्क्वायर ई टू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर एक्स टू पावर 3/2 इनटू आर बी बाई एल। अब अगर वो पूछते इसमें इसी क्वेश्चन में इनिशियली कितनी है, तो इनिशियली आर डैश इज कैपिटल आर। अगर वो पूछ रहे मिड वे कितनी है, तो आर डैश इज आर बाई 2, तो वहां से आप कर सकते हैं सॉल्व किसी भी पॉइंट पे, बिकॉज मैंने क्वेश्चन चेंज कराया था। क्वेश्चन में दो पार्ट थे। फर्स्ट पार्ट था व्हेन द कांटेक्ट फाइंड द ईएमएफ व्हेन द कांटेक्ट बिगिंस टू स्लाइड, और सेकंड पार्ट था व्हेन इट इज स्लाइड हाफ द लेंथ ऑफ रियोस्टेट। तो मैंने वो जनरल कर दिया कि एट एनी इंस्टेंट निकाल दो। नेक्स्ट राइट, ये समझ आया सबको कैसे किया? Magnetic field in a region is magnetic field in a region is given by magnetic field in a region is given by V is equals to P naught by L K cap, where L is fixed length. Conducting rod of length L lies along y-axis. Conducting rod of length L lies along y-axis with one end at the origin and other at 0, L0, 0, comma L, comma 0. If rod moves with velocity, V is the V naught I cap. Find EMF induced between ends of the rod. If rod moves with velocity, V is the V naught I cap. Find the EMF induced across ends of the rod. Basically, if you complete your कहानी दिया उन्होंने, it means that हमारे पास एक rod है जिसका एक एंड ओरिजिन पे है, दूसरा एंड एल डिस्टेंस पे है। एक एंड ओरिजिन पे गिर, इसके कोऑर्डिनेट्स और दूसरे एंड के कोऑर्डिनेट 0 और 0। मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में दिया था, के कैप। मैग्नेटिक फील्ड दिया P naught by L outwards, और ये रॉड मूव कर रही है वेलोसिटी along x axis। नॉर्मली जब हमने पहले रोटेशन का केस किया था तो हमने लिया था v वेरिएबल है, इस केस में v कांस्टेंट और v वेरिएबल है, तो इसमें भी ऐसे ही करना पड़ेगा। पहले स्मॉल लेंथ dx, अगर मैं यहाँ पे स्मॉल लेंथ लेता हूँ उसे dy,
at a distance y from a region. इसके क्रॉस EMF इंड्यूस लिखते होंगे. We say it's V naught into P by, and V is given. तो total EMF induced variable हो गया y. Y varies from 0 to L. कौन सा? पहले हमने V को वेरिएबल लिया था, P को x ओमेगा लिख दिया था. तो स्मॉल पहले पार्ट की निकालनी पड़ेगी, क्योंकि हमने जो डेरिवेशन किया दैट वाज फॉर यूनिफॉर्म एंड मैग्नेटिक फील्ड एंड कांस्टेंट वेलोसिटी. तो रोटेशन में हमने लिया था v वेरिएबल है, p कांस्टेंट है. इसमें p कांस्टेंट है, v वेरिएबल है. मेथड सेम है, लॉजिक सेम ही रहेगा. तो सब क्या है, समझ आया ना कैसे किया? दिस इज क्वेश्चन नंबर 54 of the book.